Hello friends, this is the part 2 video of mechanical properties of engineering materials. 5 properties such as strength, elasticity, plasticity, stiffness and resilience I have already discussed in previous video. You can go to the I button and check that. Now, at this video, I will start my discussion from the next property, and that is toughness. Okay. What is toughness? It is defined as the ability of material to absorb energy before fracture takes place. मतलब फ्रैक्चर होने से पहले, मतलब एक मटेरियल पे अगर लोड अप्लाई हो रहा है तो वो फ्रैक्चर होने से पहले कितना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज कॉल्ड टफनेस. दिस प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर मशीन कंपोनेंट्स which are required to withstand impact load, bending load, twisting load. So for this kind of load, the required property is toughness. It is measured by a quantity called modulus of toughness. So now understand what is modulus of toughness. We have to go to the stress strain diagram. Suppose this is, once again, suppose this is the stress strain diagram. I am drawing here. Here stress at this direction and strain at this direction. Okay. Now suppose this is the stress strain diagram for a mild steel. Suppose this is the stress strain diagram for a mild steel. We all know there is a proportional limit, then elastic limit. Suppose this is the elastic limit. This is ultimate stress point and this is the fracture point. Okay. So now if I draw a vertical line from the fracture point, so this total area under the stress strain diagram up to fracture point is called modulus of toughness. Okay, now one thing we have to understand why it is called modulus of toughness, because this type of word we have also heard in case of resilience. What is the resilience? Up to elastic limit, the area under the diagram, that is modulus of resilience, and total area under the diagram is called modulus of toughness. Why the term modulus is coming? Let's understand this. Modulus means it defines per unit volume. Per unit volume. Okay. Okay. Understand this diagram. This is the stress strain diagram. Along x direction strain, along y direction stress. If I draw a rectangle at this diagram
and I will ask you the area of this rectangle. So what would be your answer? The length into breadth or height. Okay, this area. Length means here strain and height means here stress. तो मतलब स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. अब स्ट्रेस का मतलब क्या है? लोड पर यूनिट एरिया. एंड स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो एट द डिनोमिनेटर सेक्शन you can see the entity is nothing but volume, area into length. Okay, area into length. Volume means at this diagram, in this stress strain diagram, whatever area you are taking, that is per unit volume, and that's why the term is said in this way: modulus of toughness, modulus of resilience. Clear? ओके, वेरी गुड. तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या है ना. एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर, इट विल बी कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. तो जिसका एरिया जितना बड़ा होगा उसका टफनेस उतना ज्यादा होगा. ओके. And remember one thing, this toughness property is very required property for structural steel, because in case of structure, what is structural steel? Means by using which steel the most of the structure part are made. Okay, so in structural steel this is very required property, toughness. Okay. Okay, so next property I am coming, and that is malleability. So next part is coming, that is malleability. It is defined as the ability of a material to deform to a greater extent before the sign of crack when it is subjected to compressive force. Malleable metal can be rolled, forged, extrusion, because these process involve shaping under the compressive force. देखो मैलिएबिलिटी क्या डिफाइन कर रहा है कि कॉम्प्रेसिव फोर्स में क्रैक ना होके जो मटेरियल ज़्यादा डिफॉर्म हो सके उसी को हम ज़्यादा मैलिएबल बोलेंगे. क्लियर? तो दिस प्रॉपर्टी इज कमिंग अंडर द कॉम्प्रेसिव फोर्स. एज फॉर एग्जाम्पल, लो कार्बन स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम are the highly malleable metals. In general, malleability increases with temperature. Means जितना टेम्परेचर बढ़ेगा malleability उतना बढ़ेगा. Okay. Now I am moving to the next property, that is ductility. It is defined as the ability of a material to deform to a greater extent before the sign of crack when it is subjected to tensile force. Remember, at the previous property is malleability and this property is ductility. Both properties are in the category of deformability. Both are signifying the deformability of a metal. But what is the difference between these two?
Difference between these two is only based on the type of force, because ductility is applicable for tensile force, whereas malleability is applicable for compressive force. Okay. Ductile materials are those materials which deformed plastically to a greater extent prior to fracture in a tension test. मतलब एक टेंशन टेस्ट जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग करते हैं लैब में, तो उस टेंशन टेस्ट में जिसका जो जितना डिफॉर्म हो सके बिफोर फ्रैक्चर, उसको हम ज़्यादा डक्टाइल बोलेंगे. As for example, mild steel, copper, aluminium, those are highly ductile metal. Remember, all ductile materials are malleable, but all malleable metals not necessarily be ductile. Okay, and ductility is measured by percentage of elongation. Okay, now percentage of elongation. What is that? Percentage of elongation. It is nothing but change in length by original length of sample material into 100, and that will be called percentage elongation. Okay, and another thing, in case of area, percentage reduction in area, because in the tensile test this type of sample is produced and a tensile force is applied at this location. So before fracture, as per ductile material, a necking occurs. Necking means what? The area gets reduced here before crack. So here area is decreasing, right ना? अच्छा, ये एरिया क्यों कम हो जाता है इसको समझो. मान लो ये गेज लेंथ, मतलब इनिशियल लेवल में लेंथ था L0. ओके, अब जब इसको खींचा जा रहा है टेंसाइल फोर्स से, तो ये लेंथ बढ़ के हो गया L1. मान लो नया लेंथ हो गया L1. ओके, अब जितना लेंथ बढ़ा है L1 माइनस L0, इतना इंक्रीज इन लेंथ हुआ है. तो इंक्रीजिंग इन लेंथ मतलब क्या? मतलब क्या होगा? मतलब ज़्यादा मटेरियल आ गया, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है. तो एक्स्ट्रा मटेरियल कहाँ से आया? यहाँ पे एरिया रिड्यूस होके, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो है ये सैंपल में ये तो सेम ही रहने वाला है, बाहर से हम मटेरियल ऐड तो नहीं कर रहे हैं. तो एज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज सेम, सो if length increase then area decreases because the excess amount of metal is supplied from this area. Okay, so this is the percentage of elongation. And percentage reduction in area, same thing, change in area by original area. Original area into 100%. This is the criteria to define ductility of a material. Okay, so next property is brittleness. It is the property of a material which shows negligible plastic deformation before fracture takes place. It is just opposite to the ductility. Okay, let us understand this by using a stress strain diagram.
of a brittle material. Strain, stress. Fracture takes place. So this would be an example of stress strain diagram of a brittle material such as cast iron. It is the common example of a brittle material and very famous material, cast iron. So from this diagram we can easily understand the brittleness property क्या कह रहा है यहाँ पे. ये देखो, एरिया अंडर द डायग्राम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डक्टाइल मटेरियल एज अ माइल्ड स्टील. सो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटल मटेरियल का टफनेस भी बहुत कम होता है. ये हम यहां से बता सकते हैं इस डायग्राम से. क्लियर? क्योंकि वी ऑल नो दैट एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिफाइंस मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. We have already seen in the previous section that for ductile materials such as mild steel, the area under the stress strain diagram is larger than the in case of cast iron. So that's why this is the brittle material, cast iron. Okay. Now remember one thing, that this ductility and brittleness is an opposite type of property. मीन्स डक्टिलिटी मतलब ज़्यादा डिफॉर्म होगा फ्रैक्चर होने से पहले, और ब्रिटलनेस का मतलब होता है कम से कम, जितना कम हो सके उतना, मतलब जितना कम डिफॉर्म होगा फ्रैक्चर होने से पहले वो उतना ज़्यादा ब्रिटल है. जैसे ग्लास जो मटेरियल है उसका डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, लगभग एकदम से टूट जाता है, डायरेक्ट फ्रैक्चर. तो मोस्टली ब्रिटल. कास्ट आयरन में थोड़ा बहुत होता है डिफॉर्मेशन कंपेयर टू ग्लास, एंड माइल्ड स्टील में बहुत ज्यादा होता है. इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है. और एक चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ए टेंसाइल स्ट्रेन और परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन इफ मोर देन 5%, देन द कैटेगरी ऑफ द मटेरियल वुड बी अंडर डक्टाइल मटेरियल. परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन more than 5%, it would be a ductile material. Now I am moving to the last property, that is hardness. It is defined as the resistance of the material to penetration or permanent deformation. It usually indicates resistance to abrasion, scratching, cutting or shaping. ये हार्डनेस बेसिकली एक सरफेस रिलेटेड प्रॉपर्टी होता है. मतलब यहां पे देखो, एज पर डेफिनेशन इट इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन मतलब क्या, मान लो कि ये एक मटेरियल सरफेस है, तो यहां पे एक इंडेंटर से पेनिट्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है. तो ये जितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकेगा उसका हार्डनेस उतना ज्यादा है. Okay. It is an important property in the selection of material for parts which rub on one another, such as gear pinion, cam and follower, rail and wheel, and parts of ball bearing. मतलब इस तरह के कंपोनेंट में क्या होता है, हाई स्पीड में बहुत रबिंग होता है एक दूसरे के सरफेस से. और हमें पता है कि हर एक मटेरियल सरफेस कभी भी ये लाइन की तरह स्मूथ नहीं होता. अगर माइक्रोन लेवल में चले जाओ तो ये इस तरह का सरफेस होता है, पिक्स एंड वैलीज रहते हैं सरफेस में. और इसका जो मेटिंग सरफेस है वहां पे भी पिक्स एंड वैलीज होगा. तो अगर ये एक दूसरे से रब करेगा तो ये टूट जाने का डर है, और टूटता है. इसी से वेयर एंड टियर होता है मटेरियल के ऊपर. ठीक है. तो इस तरह के कंपोनेंट में जहां पे ज्यादा वेयर एंड टियर का पॉसिबिलिटीज है वहां पे हार्डनेस उतना ज्यादा चाहिए होता है. ठीक है. और ये सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस से किया जाता है, जैसे गियर टीथ में सरफेस हार्डनिंग किया जाता है. तो ये सरफेस हार्डनिंग मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा
क्योंकि वहां पे बहुत सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू सरफेस हार्डनिंग होता है. ओके, देयर आर 4 primary methods of measuring hardness. Number 1, Brittle hardness test. Number 2, Rockwell hardness test. Number 3, Vickers hardness test. And Shor's kaleidoscope. Okay, इतना तक समझ में आया, आई होप. ओके, अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है और कोई भी सुझाव है तो कमेंट करके बताना. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.